Okay, let's make a start. Please follow your handouts. We are going to go on with IELTS listening module, and there is this test we are going to solve together. All you need is pencil, full attention, concentration on what we are actually doing. Okay? So each test contains 40 questions. In each section, there are 10 questions, and the level of difficulty will increase. Level 1 means section 1 or part 1 is easy. Part 2 will be a little more difficult, then part 3, and then part 4. Sometimes some question types are difficult for you. For example, we've got a question type that is called multiple choice. Then we have matching. These question types are commonly difficult for the students. But on the other hand, sentence completion is very easy and simple. And most of the time in part 1 and part 4, you will get sentence completion type of questions. Okay, so let's make a start. First of all, it's section 1, complete the notes below. अब इसका क्या मतलब है कि आपने नोट्स को कंप्लीट करना है, ठीक है? और ये नोट्स कंप्लीशन जो है ये सबसे आसान क्वेश्चन टाइप है. नेक्स्ट दिया हुआ है, राइट वन वर्ड एंड और आ नंबर. अब आंसर में क्या होना चाहिए? वन वर्ड एंड और आ नंबर. या तो वर्ड होगा या नंबर होगा या दोनों ही होंगे. मतलब या वर्ड या नंबर और या फिर दोनों ही हो सकते हैं. मूविंग टू बेनफोर्ड सिटी. अब बेनफोर्ड शहर का नाम है और मूविंग का मतलब है, फर्ज करें आप लाहौर से इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाते हैं, इसी तरह से कोई बंदा मूव होके आया है बेनफोर्ड सिटी में. मूविंग टू बेनफोर्ड सिटी. अब एग्जाम्पल दी हुई है. एग्जाम्पल से क्या होगा, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑडियो स्टार्ट कैसे हो रही है. एग्जाम्पल में उन्होंने दिया हुआ लिंडा रेकमेंड्स लिविंग इन सबर्ब ऑफ डॉल्टन. अब डॉल्टन का वर्ड दिया हुआ है ऑलरेडी, तो जब ऑडियो में डॉल्टन बोलेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे पहुँच गए हैं. फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके कान ऑडियो के साथ ट्यून इन हो जाएंगे एंड देन यू कैन फाइंड द आंसर्स ईजीली. अच्छा देखिए, इस पे 4 हमारे पास मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं. एक है एकोमोडेशन, दूसरा क्या है ट्रांसपोर्ट, तीसरा है एडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन बेनफोर्ड और चौथा है मीट लिंडा. अब ये 4 टॉपिक्स हैं जिन पे ऑडियो चलेगी और पार्ट 1 में हमेशा डायलॉग होता है, 2 लोग आपस में बात करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा होता है एंड ऑल दैट. सो एकोमोडेशन में एवरेज रेंट का वर्ड दिया हुआ है, आगे पाउंड साइन दिया हुआ है. पाउंड साइन से हमें पता चल गया कि अमाउंट होगी, आंसर अमाउंट होगी, और आपने पाउंड का साइन नहीं लगाना क्योंकि ये ऑलरेडी लगा हुआ है. तो जो आप आंसर भी ट्रांसफर करेंगे आंसर शीट पे, पाउंड का साइन नहीं लगाएंगे. आगे दिया हुआ है आमद. अब देखें क्या होगा, ऑडियो में आपको वो हो सकता है मिनिमम रेंट बताएं, मैक्सिमम रेंट बताएं, फिर आपको बताएंगे एवरेज रेंट इतना है. मतलब फर्ज करें अगर आपसे कहते हैं कि आपको यहाँ पे कम से कम 500 में फ्लैट मिल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 2000 में भी मिल जाता है, लेकिन एक एवरेज रेंट जो चल रहा है वो 1000 है. ठीक हो गया, आंसर क्या होगा 1000. ठीक है, तो ये आपने सुनना है, समझना है. अच्छा इसकी ऑडियो थोड़ी सी स्लो है, राइट मतलब एक नेचुरल स्पीड होती है ना, उससे ये मुझे जिस तरह से ऑडियो मिली थी ना उसमें थोड़ा सा ये स्लो मोशन में है थोड़ा सा, सिर्फ पार्ट 1 में. पार्ट 2, 3, 4 दे आर ऑल ओके. सो लेट्स मेक अ स्टार्ट. Hello, Linda speaking. Oh, hi, Linda. This is Matt Brooks. Alex White gave me your number. He said you'd be able to give me some advice about moving to Banford. Yes, Alex did mention you. How can I help? Well, first of all, which area to live in? Well, I live in Dalton, which is a really nice suburb. Not too expensive, and there's a nice park. Sounds good. Do you know how much it would be to rent a 2-bedroom flat there? Yeah, you should be able to get something reasonable for £850 per month. That's what people typically pay. You certainly wouldn't want to pay more than £900. That doesn't include bills or anything. No, that sounds all right. I'll definitely have a look there. Okay, so what's the correct answer? 850. And then she said that's people typically pay.
नाउ पीपल टिपिकली पे का क्या मतलब है कि एवरेज रेंट ये कि आमतौर पे लोग इतने पैसे देते हैं, सो दैट इज एवरेज रेंट. सो करेक्ट आंसर इज 850 और 850 को आपने नंबर में लिखना है 850. ओके अच्छा जी आगे चलते हैं. उसके बाद है ट्रांसपोर्ट. लिंडा ट्रेवल्स टू वर्क बाय, वेरी सिंपल कि लिंडा काम पे जब जाती है किस चीज पे जाती है, बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. और वर्क की बात हुई है, अगर वो ये कहे वेन एवर आई गो फॉर शॉपिंग आई गो बाय बस, बट फॉर माई ऑफिस आई यूज ट्रेन. आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेन. मतलब आपने ना आंखें खुली रखनी है, कान खुले रखने हैं, सुनना है और समझना है कि यहाँ पे दिया हुआ है लिंडा ट्रेवल्स टू वर्क बाय, के काम पे जिस कन्वेंस पे वो जाती है दैट विल बी द आंसर. अगर वो ये कहे आई कम्यूट टू माई ऑफिस बाय मेट्रो, आंसर क्या हो जाएगा, मेट्रो. ठीक है, अब देखना ऑफिस या वर्क किस चीज पे जाती है. Are the transport links easy from where you live? Well, I'm very lucky. I work in the city centre, so I don't have to use public transport. I go by bike. Oh, I wish I could do that. Is it safe to cycle around the city? Yes, it's fine. And it keeps me fit. I go by bike. Exactly. It keeps me fit and all that. So bike will be the right answer. And she said, I don't have to use public transport. ओके और वैसे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आंसर नहीं हो सकता, वन वर्ड ओनली है और वन वर्ड में वन वर्ड का ही आंसर आएगा. वन वर्ड के साथ आपने कोई एक्स्ट्रा वर्ड लगा दिया तो भी आंसर गलत हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3, लिमिटेड डैश इन सिटी सेंटर. अब सिटी सेंटर में सोचें वो बाइसिकल पे जा रही है क्योंकि कोई चीज है जो लिमिटेड है सिटी सेंटर में, क्या हो सकता है, वेल डन. ओके अगर आप ऑडियो को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपको समझ आ रही है कि क्या हो रहा है, तो आपको बगैर सुने भी आंसर मिल जाएगा. ठीक है, लिमिटेड. ऑलराइट, अच्छा लिमिटेड के लिए वर्ड क्या यूज होगा, हार्डली एनी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहता हूँ लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्स, तो आंसर होगा, मतलब ऑडियो में बोल सकते हैं देयर आर हार्डली एनी रिसोर्सेज. हार्डली एनी रिसोर्सेज का मतलब है लिमिटेड रिसोर्सेज. ठीक है, अब इसको सुने एंड आंसर. Anyway, driving to work in the city centre would be a nightmare because there's hardly any parking. There is hardly any parking. Driving to work in the city centre is a nightmare because there is hardly any parking. Hardly any parking का मतलब है limited parking. So right answer is parking. Good. ओके क्वेश्चन नंबर 4, ट्रेन्स टू लंदन एवरी डैश मिनट्स. नहीं आप कहते लंदन हर 10 मिनट के बाद एक गाड़ी चलती है, ठीक है, या इस्लामाबाद हर 1 घंटे के बाद एक गाड़ी चलती है. तो ट्रेन्स टू लंदन एवरी डैश मिनट्स, अब आंसर क्या होगा, नंबर. ठीक है, और लंदन के लिए अगर वो ये कहें ट्रेन्स टू बेडफोर्ड एवरी 15 मिनट्स, क्या वो आंसर होगा, नहीं, जब तक कि उसमें लंदन की बात ना हो. तो लंदन जो है हर कितने मिनट के बाद ट्रेन चलती है, आंसर विल बी अ नंबर. And the traffic during the rush hour can be bad. I'd be working from home, but I'd have to go to London 1 or 2 days a week. Oh, that's perfect. Getting to London is no problem. There's a fast train every 30 minutes, which only takes 45 minutes. That's good. Okay. 30 or 45? 30. There is a fast train every 30 minutes and it takes 45 minutes. क्या मतलब है, पहुंचाने में 45 मिनट्स लगते हैं लेकिन हर आधे घंटे के बाद एक ट्रेन चलती है. तो आंसर क्या हो जाएगा, 30 सिर्फ, क्योंकि मिनट्स ऑलरेडी लिखा हुआ है. अगर आपने 30 के साथ मिनट्स भी लिख दिया तो आपका राइट आंसर रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, इसका ख्याल रखना है. करेक्ट आंसर इज 30. लेट्स गो ऑन. पुअर ट्रेन सर्विस एट. अब कौन सा मौका है जिस पे ट्रेन सर्विस बड़ी बेकार हो जाती है, पुअर ट्रेन सर्विस एट. ये कोई टाइम हो सकता है दिन का, पुअर ट्रेन सर्विस एट मिडनाइट, पुअर ट्रेन सर्विस एट 12 o'clock, या पुअर ट्रेन सर्विस एट कोई ऐसी मौका या टाइम जिस पे ट्रेन सर्विस बड़ी पुअर हो जाती है. अब पुअर के लिए वो कोई और वर्ड यूज कर सकते हैं, द ट्रेन्स आर वेरी स्लो एट मिडनाइट. मिडनाइट का आंसर हो जाएगा. Yeah,
The train service isn't bad during the week, and they run quite late at night. It's weekends that are a problem. They're always doing engineering work, and you have to take a bus to Haddam and pick up the train there, which is really slow. Okay, so weekend? No? Midnight? All right, listen again. Yeah, the train service isn't bad during the week. The train service isn't bad. अब isn't bad का मतलब है ये आंसर नहीं है during the week. अगर week के दौरान bad नहीं है तो फिर weekend पे bad होगी. Right? Let's say. And they run quite late at night. And they run quite late at night. Okay, train service isn't bad during the week and it runs quite late at night. That are quite late at night. It's weekends that are a problem. Okay, it's weekends that there are problems. So weekends. What does it mean? Poor train service at weekends. और poor की जगह पे उसने बोला problems. So answer is weekend. Singular लिख लें या weekends plural लिख लें. दोनों answers ठीक हैं. Right? Okay, let's go on. Advantages of living in Benford. अब अगर आप बेनफर्ड में रहते हैं तो वहां रहने के फायदे क्या हैं? न्यू डैश ओपनड रिसेंटली. अब कोई नई चीज वहां पे खुली है. न्यू मॉल ओपन रिसेंटली, न्यू हॉस्पिटल, न्यू कॉलेज, न्यू स्कूल. अब न्यू का वर्ड जो है वो न्यू का वर्ड आ सकता है या आ सकता है ब्रांड न्यू और एनी अदर थिंग. ठीक है, अब आपने सिर्फ ये देखना है कि जो चीज ऑलरेडी वहां पे है वो आंसर नहीं होगा. जो चीज नई बनी है दैट विल बी द आंसर. There are some nice restaurants in the city centre and a brand new cinema, which has only been open a couple of months. Okay, there are restaurants. Restaurants तो already हैं. फिर उसने क्या बोला? A brand new cinema, which has opened a couple of weeks ago and all that. So answer क्या हो जाएगा? Cinema. ठीक है? Good. इसको pronounce करते हैं cinema. IELTS लिसनिंग जो है बेस्ट सोर्स है आपकी प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करने का. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज सिनेमा. क्वेश्चन नंबर 7. डैश हैज एक्सीलेंट रेप्यूटेशन. कोई चीज है जिसकी रेप्यूटेशन बड़ी अच्छी है. कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई कॉलेज हो सकता है, कोई सिटी सेंटर, कम्युनिटी सेंटर हो सकता है जिसकी रेप्यूटेशन बहुत अच्छी है. अच्छा, एक्सीलेंट रेप्यूटेशन को अंडरलाइन करें और इसकी जगह पे वो यूज कर सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट. अब अगर वो बोलें वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट्स तो इसका मतलब है कि रेस्टोरेंट हैज एक्सीलेंट रेप्यूटेशन. ठीक है, अब जरा सुनिएगा एंड आंसर. The schools are good, and the hospital here is one of the best in the country. Everyone I know who's been there's had a positive experience. Okay, so school is good. लेकिन उसने बोला हॉस्पिटल इज वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री. अब जो वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री है तो दैट हैज एक्सीलेंट रेप्यूटेशन, कि जो पूरे मुल्क में मशहूर है. इसका क्या मतलब है कि उसकी रेप्यूटेशन बहुत अच्छी है. सो करेक्ट आंसर इज हॉस्पिटल, नॉट स्कूल. और एक राइट आंसर के साथ हमेशा आपको एक गलत आंसर देंगे. देखेंगे कि आपको समझ आ रहा है या आपको जो भी आंसर मिला आपने लिख दिया. ठीक है, स्कूल इज गुड. दोबारा जरा थोड़ा सा सुनते हैं इसको. The schools are good, and the hospital here is one of the best in the country. ठीक हो गया. स्कूल इज गुड एंड हॉस्पिटल इज वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री. अच्छा जी, गुड डैश ऑन ब्रिज स्ट्रीट. अब ब्रिज स्ट्रीट एक गली का नाम है. ठीक है, तो जैसे आपके गलियां होती हैं ना वैसे ही गली का नाम है ब्रिज स्ट्रीट. गुड डैश ऑन ब्रिज स्ट्रीट. अब ब्रिज स्ट्रीट पे गुड क्या है? कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई और चीज हो सकती है लाइक दैट. ओके. Oh, I can give you the name of my dentist too in Bridge Street, if you're interested. I've been going to him for years and I've never had any problems. Oh, okay, thanks. I'll find his number and send it to you. So
Dentist. कितना घुमा के बात की. Good dentist on Bridge Street. Oh, I can give you the name of my dentist too, in Bridge Street. I can give you the name of my dentist too in Bridge Street. और वो काफी अरसे से उसके बाद जा रही है, इसका मतलब है कि डेंटिस्ट अच्छा है तो जा रही है, राइट? सो आंसर इज डेंटिस्ट. मीट लिंडा. अब लिंडा को अगर मिलना है तो कहाँ पे मिलें? मीट लिंडा ऑन डैश आफ्टर 5:30 PM. ऑन का क्या मतलब है? डे ऑफ द वीक. ठीक है. अब अगर वो ये कहती है कि ऑन मंडे आई एम क्वाइट बिजी बट यू कैन ऑलवेज मीट मी ऑन वेंसडे एट 5:30 PM. आंसर क्या हो जाएगा? वेंसडे. ठीक है. गुड. Thanks. That would be really helpful. Are you planning to visit Banford soon? Yes. My wife and I are both coming next week. We want to make some appointments with estate agents. I could meet you if you like and show you around. Are you sure? We'd really appreciate that. Either Tuesday or Thursday is good for me, after 5:30. Thursday is preferable. Tuesday, I need to get home before 6 p.m. Okay. Great. So, Thursday. She said Tuesday or Thursday, and he said Thursday is okay. On Tuesday, I have to reach home before 6 p.m. तो देखें फिर आपको Thursday के साथ Tuesday का लाजमी उन्होंने झांसा दिया है. ठीक है. करेक्ट आंसर इज Thursday. और Thursday पूरा लिखें ज़्यादा बेहतर है. THURSDAY. लास्ट इन द डैश ऑपोजिट द स्टेशन. ऑपोजिट को अंडरलाइन कर लें. अब उन्होंने जो मिलना है, पहले तो उन्होंने दिन और टाइम डिसाइड कर लिया, अब वो जगह डिसाइड करने लगे. तो किस जगह पे मिलेंगे? इन द डैश ऑपोजिट द स्टेशन. के कोई एक लोकेशन है जो स्टेशन के दूसरे साइड पे है. ऑपोजिट की जगह पे आ सकता है बट अदर साइड ऑफ द रेलवे स्टेशन या ऑपोजिट साइड ऑफ द स्टेशन. ओके. Let me know which train you're catching, and I'll meet you in the cafe outside. You can't miss it. It's opposite the station and next to the museum. Brilliant. Okay. Cafe? Sure? Good. Cafe, it's outside and then opposite to the station. You can't miss it. Correct answer is cafe. Or